पर इसको अप्लाई कर दिया। फिर हम यहाँ पर एक आइडियली अपने हाथ पे घड़ी को मद्देनजर रखते हुए देखें कि हमने कितनी देर पेशेंट को उसको लगा के रखना है। जिससे टाइम पीरियड जो है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के बीच में स्टिल ये अगेन कहीं से ड्रिबल नहीं हो रहा। ये मैंने लिया, इसके अंदर डाल के इसको यहाँ रख के ये लेके इसको ऐसे बंद करके रखा है, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ प्रेशियस थिंग टू हैव। इसकी सेफ्टी करके हमने साइड में रख दिया और अब हम पेशेंट के साथ खड़े रहेंगे, ना उठ के यहाँ से जाएंगे कहीं। They both are giving very good results on chemical peels, especially on glycolic acid peels. And they are very cheaper for the patient because laser treatments like pico laser, that is very expensive for our patients. One sitting costs 22,000 for the patient, and chemical peel just costs 2,000 to 5,000 rupees for a patient. So melasma is a common chronic form of hyperpigmentation of the skin that can have a serious impact on someone's self-esteem and quality of life. And wearing sunblocks just not avoid the melasma. So we have to go some extensive treatments for melasma, like some topical creams and some procedures, dermabrasions, lasers. But the chemical peel has very good results on melasma. As well as we have to manage our patients' hormones too. Like the patients who take birth control pills, they are prone to develop melasma, as well as the pregnant women or the patient who pass through delivery of a child or abortions, they can develop melasma easily. Chemical peels can act as a second line defense in patients who are good candidates. As well as on benefits, chemical peels reduces acne marks and blemishes. Certain type of chemical peels will help to control acne breakouts plus reduce scarring from past blemishes. They do this by unclogging pores, skimming the surface of the skin to remove blackheads, and depositing ingredients that help to fade post-pimple marks. Also, the another benefit of chemical peel is softens fine lines. If you are looking to fade the appearance of fine lines, wrinkles near your forehead, eyes and mouth, then opting for a chemical peel is a good option as well as a cheap option. Otherwise, you have to go for Botox or fillers and PRPs. They are more expensive procedures instead of chemical peels. A medium peel might be enough to soften the lines or remove the lines, while a deep peel is the best option for deeper lines as they develop over the forehead. After a medium or deep peel, it's important to protect your skin from sun damage as much as possible, because if you don't protect your skin from sun, it will damages your skin and it becomes very disturbing your patient, and it will cause hyperpigmentation more over the affected areas. The side effects of chemical peels are the many benefits you can get from chemical peels might sound too good to be true, but not too fast. There are also disadvantages of chemical peels, and disadvantages are very dangerous. Chemical peel side effects include stinging, numbness, burning of the face if the doctor is not experienced. Skin peeling including excessive peeling if you have a medium depth or deep. Redness is another side effect of chemical peel, and it's mild sunburn to a deeper red affected peeling area. Crusting or scrubbing of the skin due to skin becomes removed. Increased photosensitivity, that's why you have to give sunblock to your patient after post-chemical peel procedure. In some cases, when someone has sensitive skin, scarring, keloid formation, dermatosis, and hyperpigmentation or hyperpigmentation is very common side effect of chemical peel. Recovery time ultimately depends on recovers early and old patient recovers late. And any reaction, if someone has any reaction to the chemical peel, then it's difficult to recover. So it's better to do a patch test before applying a chemical peel all over the face. Just apply a pinch of or a drop of chemical peel behind the ear and check is there any blister formation or any vesicle formation, then don't do it. Otherwise you can go for whole face area. These are the common side effects. If you will keep the chemical peel over the face for a long time,
more than 3 minutes or 5 minutes, it develop blisters over the face. It can be treated, but be careful, because the patient will never happy with these scars. They will say that डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया, मैं तो पहले ज़्यादा ठीक थी, मेरे तो निशान ऐसे थे. Then you have to go for some topical steroid creams or soothing lotions and say them that the recovery time is from 0 to 48 hours, but complete recovery in this case, when the blisters occur, it's up to 15 days. Another side effect, the whole portion is burned. But why that longitudinal portion is burned? When doctor applies the chemical peel, one direction and one direction and one direction, maybe sometimes they produce more pressure on some affected area. So when you go longitudinally, use the same pressure. Don't put your hand deeply on the cheek or on the nape. Just put very slow punches on the face. If you will give more pressure, you will find your patient like this. And if someone will induce this type of lesion over my face or over your face, so it's not very happy and healthy for us. So always careful for the pressure effect as well. We have to take care of pressure effects as well. Another side effect is desquamation. Desquamation is another side effect, and if someone goes for a marriage ceremony next day and you will give this side effect to your patient, she will destroy your future in the city. So take whole history, because the role of history is very important. And when you will ask, भाई आपको कहीं जाना तो नहीं है, आपने कोई शादी तो नहीं है, कोई कॉन्वोकेशन तो नहीं है, कहीं दावत में तो नहीं जाना. If there are 15 days in any दावत और any शादी, then go for the chemical peeling. अगर नहीं है इतने दिन शादियों में और दावतों में, तो आप उसको रोक के रखें कि नहीं भाई आप पहले अपनी शादी कर लें, फिर हम आपकी पोर्स को रिड्यूस करेंगे, आपके रिंकल्स को रिड्यूस करेंगे. इसमें कोई शक नहीं है कि सस्ता तरीन तरीका है. आप 2000 में केमिकल पील करके वही रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो कि 22,000 के पीको की एक सिटिंग से हासिल करते हैं, ये बॉटॉक्स से हासिल करते हैं. लेकिन क्या है कि हमारी डॉक्टरों की भी उस पर है कि हम भी अपने इमीडिएटली आपके पास जो है कोई ना कोई पोटेंट स्टीरॉयड होना चाहिए जो आप उसको लगाएं ताकि उसकी स्किन सूदिंग की तरफ जाए. प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? केमिकल पील इज अ स्किन रीसरफेसिंग प्रोसीजर. आज से 20 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र बहुत ज़्यादा फेमस था, और उसके जो हैं उस ज़माने में भी 25,000 रुपये पर सिटिंग चार्ज होते थे. ठीक है जी. तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र को रिप्लेस किया केमिकल पील्स ने. रिसरफेसिंग है दैट यूजेस अ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस केमिकल्स दैट आर अप्लाइड टू द स्किन. और जैसे अशर साहब ने आपको बताया कि वो कौन कौन से वेरियस केमिकल्स हैं, सैलिसिलिक एसिड हैं, ग्लाइकोलिक एसिड हैं, एजेलिक एसिड हैं, ये TCA है, ये सारे जो हैं केमिकल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. केमिकल सॉल्यूशंस कॉज द टॉप लेयर ऑफ स्किन टू पील ऑफ, रिवेलिंग स्मूदर स्किन अंडरनीथ. अंडरनीथ जैसे उन्होंने बताया था स्ट्रेटम कॉर्नियम है, फिर स्ट्रेटम वेजल जो है सबसे छोटी लेयर है 5वें नंबर पे. तो जब आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम से ट्रीटमेंट शुरू होती है, TCA लगता है और वो जाके 5वीं लेयर तक गिरता है, तो वो नीचे से रीजनरेट करना शुरू करता है स्ट्रेटम बेजल सेल लेयर के नए सेल्स को. और जब वो रीजनरेट होकर ऊपर आते हैं तो आपकी स्किन ज़्यादा यंग और गुड लुकिंग होती है. तो आप आराम से 5 साल का डिफरेंस तो केमिकल पील में डेवलप करा सकते हैं कोई भी. ठीक है. लेकिन अगर एक्सपीरियंस सीखेंगे अच्छी तरह से तो 10 साल 15 साल का डिफरेंस स्किन में आराम से डेवलप होता है. Chemical peel benefits include exfoliating, making skin smoother, minimizing skin sun damage, treating hyperpigmentation, treating acne and reducing appearance of scars, post-acne scars. हमारे बहुत सारे लोगों को यंग एज में स्कार्स होते हैं और फिर वो एट्रोफिक स्कार्स बना देते हैं, बॉक्स स्कार बना देते हैं, आइस पिक स्कार बना देते हैं, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग होते हैं. इसके अलावा चिकन पॉक्स के स्कार या स्मॉल पॉक्स के स्कार लोगों के चेहरे पे होते हैं, वो भी पेशेंट के लिए बड़े हर्टिंग होते हैं. इसके अलावा कई लोगों को बात करने में अपने फॉरहेड पे लाइनें डालने की आदत होती है, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेहरे पे देते हैं, उसकी वजह से उनको छोटे होते से ही लाइनें पड़ना शुरू हो जाती हैं. तो इन सब चीज़ों को केमिकल पील आपका ट्रीट करेगा. एंड साइड इफ़ेक्ट्स आर मोर कॉमन इन मीडियम एंड डीप पील्स.
तो जो इनिशियल स्टेज पे लोग पील्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप पहले सुपरफिशियल पील से शुरू करें। सुपरफिशियल पील में अगर आपका पेशेंट थोड़ा बहुत बर्न भी हो गया तो आप उसको टॉपिकल स्टीरॉइड देंगे, वो हफ्ते में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेस, थैंक यू सो मच। बिकॉज मैं जो क्रीम यूज कर रही हूँ वो तो जेल बेस्ड है, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादातर क्रीम मार्केट में अवेलेबल है वो लिक्विड बेस्ड है। जेल क्रीम बिल्कुल स्टिक नहीं होती, बहुत उसका कंट्रोल स्प्रेड होता है। इवन अगर आपके हाथ से वो स्प्रे भी हो जाए तो वो इतनी ज़्यादा उसमें से ड्रॉपर से निकलता ही नहीं है कि वो बुरा हो। तो ये बॉटल तो बहुत ही अच्छी है, मैं आपको बताऊंगी अपने प्रोसीजर के बीच में। तो ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू क्लोज देयर आईज प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने कहा था बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मॉइस्चराइजेशन करेंगे, दिन में सन ब्लॉक को सन की एक्टिविटी अवॉइड करेंगे, लेकिन बाहर निकल सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा फिर ये मॉइस्चराइज करने के 3 दिन के बाद फिर अपने यूजुअल प्रोडक्ट्स जो लगा रही थी उन्हें यूज़ कर सकती है। तो विद दैट अब उनको मॉइस्चराइजर लगाएंगे और इसके बाद ये करेंगे। मॉइस्चराइजर के लिए हम बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, बट फिर नाउ हम फ्लॉक्सिया का मॉइस्चराइजर इनके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एन आइडियल वे टू apply and smooth down। ये लगाने से आप देखें तो ये बहुत बेहतर फील करेंगी। ये पूरी स्किन इनकी आहिस्ता आहिस्ता इससे एक्सफोलिएट होगी, लेकिन अगर आप उसको ड्राई छोड़ देंगी तो वो फिर बहुत बुरी तरह उसका पेशेंट पर ऑब्वियसली पिगमेंटेशन आएगी। तो उनको बार बार आपने ये बात समझानी है कि मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना है और बार बार करना है, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज बहुत कम करते हैं ये सोच के, और खासतौर पर एक्ने प्रोन स्किन कि मेरी स्किन तो ऑयली हो तो ज़रूरत ही नहीं। तो लिहाजा हमको ये बात समझानी है कि अगर ये प्रोसीजर पीलिंग से हमने कोई रिजल्ट लेना था तो हमने मेहनत की है, तो मैं फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उसको लगाना था। यूँ ही हमारी थोड़ी सी कोई बात नहीं रहेगी भी, तो ये इससे बहुत सूदिंग महसूस करें। सो विद दैट आपने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं, केमिकल पील से क्या रिजल्ट हासिल हो सकते हैं। ये थी सुपरफिशियल पील, मैंने ना मीडियम किया ना मैंने डीप किया। हम जितने भी लोग बिगिनर्स हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अपने आप को पहले इस पे पहले करने के बाद आपने देखा कि मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल प्रोसीजर थे, साइड्स आप पहले सुन चुके थे, आप समझते नहीं हैं। एंड आज आपने देख भी लिया कि पीलिंग होती कैसे है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमारे यहाँ पे ऑनरेबल डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनसे कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे मेरे ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में शेयर the book a series of treatments. Tell your skincare professional if you have a history of skincare conditions such as cold sores, herpes or any chemo radiotherapy. Obviously ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक अच्छी हिस्ट्री हुई होगी। Discontinue the use of any products containing retinol और glycolic acid fluid ज़्यादा कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ट्रीटमेंट भी करूँ और मुझे कोई फर्क भी ना पड़े या मैं लगूँ भी ना, तो ये तो मुमकिन नहीं है। So you have to explain this condition to your patients as well. So wax or use any form of other hair removal. 1 week धूप में जाते हैं, जूते पहन के धूप में जाते हैं, तो ये हिस्सा डॉक्टर पूरा डार्क हो जाता है। डार्क होने की वजह से आप पहले उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लें, क्या ये एक्जिमा की वजह से डार्क हुआ है या ये टैनिंग, सन टैनिंग की वजह से डार्क हुआ है। अगर एक्जिमा की वजह से डार्क हुआ है, पहले हम उसका एक्जिमा ट्रीट करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद केमिकल पीलिंग की तरफ ब्रश करेंगे। अगर आपने पहले ही कर लिया तो उसकी स्किन और बर्न हो जाएगी। तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस फर्स्ट, उसको अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें, प्रिपरेशन करें, 1 to 2 वीक्स दें एंड देन यू शुड प्रोसीड टू दैट। यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से स्किन के अंदर आप रेडनेस आ रही है, कैसे करते हैं, लेकिन स्टेजेस हैं। ऑब्वियसली शुरू में आप रेड होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपका कलर बेहतर होता है। और अगर आपकी स्किन पर कुछ भी नहीं होगा आफ्टर एनी ट्रीटमेंट, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट टू कम? तो हल्का फुल्का रेडनेस तो ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ इट, वो तो आनी ही चाहिए, अ बिट ऑफ एरिथेमा। लेकिन ये है कि अगर ये सब आप कर रहे हैं, देखें जिस तरीके से बर्न हो रहा है, यहाँ पर देखें ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, यहाँ पर ये देखें पूरा ब्लिस्टरी एक रिएक्शन